Hello and welcome to Kashmir Now. I'm your host Lipakshi. Let's take a look at some stories of this week's episode. People in illegally occupied POK protest against hefty electricity bills. Jet ski ride at Srinagar's Dal Lake attracting adventure tourists to the valley. Construction of road in full swing in far-flung areas of Rajouri to boost connectivity. BSF organizes free medical camp for border residents in Kathua. And later in a section of Incredible India, we'll take you to witness the festivities of Hariyali Teej. POK, which is under the illegal occupation of Pakistan, is not just subjected to economic depredation, but also to state-backed discriminatory policies. The rise in the price of commodities has always been the biggest worry among the people of the region. Recently, they came out on streets to protest against the sharp rise in the prices of electricity. Have a look. People in Pakistan-occupied Kashmir recently took to streets to protest against the high fuel adjustment charges that has led to a sharp rise in the prices of electricity. Protesters even complained about imposition of high taxes on the already increased electricity bills issued by the POK's electricity department. They said a tax of rupees 500 is imposed on a bill of 50 units. ये जो आपको पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर हर ज़िले के अंदर हर तहसील के अंदर लोग एहतजाज करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली महकमा बरक़ियात की तरफ से जारी करदा जो बिजली की बिलात हैं उनके ऊपर एहतजाज हो रहा है। इससे पहले भी बिलात आते रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा जो बिल जारी किए महकमा बरक़ियात की जानिब से उसके अंदर फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के नाम पे एक बहुत बड़ी जो अमाउंट है वो हर बिल के अंदर ऐड की गई है। और जुल्म की इंतहा देखें कि एक तो पहले आप फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस डाल रहे हैं, उसके बाद आप उन चार्जेस के ऊपर टैक्स दोबारा डाल रहे हैं। वो इतने बड़े आपके अमाउंट बन गए कि अगर किसी का 10,000 बिल है तो उसके अंदर 4,500 से 5,000 रुपया जो है वो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में एक नया जो है वो गुंडा टैक्स शामिल कर दिया गया है, जो एक आम आदमी की दस्तरस से बाहर है। और उस वजह से इस वक्त आपको पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है लोग एहतजाज करते हुए नज़र आ रहे हैं और लोगों का ये मुतालबा है कि जिस वक्त तक फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस ख़त्म नहीं किए जाएंगे हम बिजली के बिल जमा नहीं कराएंगे। This is not the first time when the hefty electricity bills are getting on the nerves of the POK people. There have been several incidents when locals have to come out on roads to protest against the high rates of electricity. And this situation is during the times when the region is estimated to produce 1,500 megawatts of electricity and is said to be the hub of hydropower generation. Locals say if the electricity is generated from the hydropower projects established in their region, then why they have to pay such heavy taxes? फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस डाले जाते हैं ये बिलों के अंदर, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, ये इसका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर के लोगों के साथ नहीं, क्योंकि यहाँ पर खालिस्तान पानी से बिजली पैदा हो रही है और उसी के हवाले से बिलिंग होनी चाहिए। ये इजाफी बोझ जो है आज़ाद कश्मीर के लोगों पे थोपा जा रहा है। इस फ्यूल प्राइस जो एडजस्टमेंट है इससे निजात दिलाई जाए और इसको ख़त्म किया जाए बिलों के ऊपर, और जो बिल है हमारे वो उनकी जो कीमतें हैं वो उसको प्रॉपर तरीके से किया जाए, उसे 13-14 रुपये पर यूनिट जो हमें पड़ता है वो हमें दिया जाए फ्लैट रेट। और ये जो इन्होंने मुख्तलिफ टैक्सेस जो थोप रखे हैं मुख्तलिफ किस्म के, इनको ख़त्म किया जाए। Islamabad has been for long exploiting the people of Pakistan-occupied Kashmir through its unjust economic policies and taxes. They have even kept them deprived of their basic rights. Pakistan, that has always posed itself to be standing for the rights of Kashmiri people, is the main subjugator in reality. And next we move on to Jammu and Kashmir, which is gradually becoming a hub of adventure sports. From skiing to trekking to rafting, the territory has a lot to offer owing to its topographical and geographical features. The new addition to the list is the jet ski ride at the famous Dal Lake,
which is attracting a number of tourists. Have a look. One of the ideal destinations for thrill seekers, Jammu and Kashmir is all set to exploit its potential for adventure tourism. Gone are the days when territory only has skiing, rafting and trekking in the name of adventure activities. Today, the tourism department has added many more options to the list. The latest addition is the jet ski ride in the silent waters of the Dal Lake. This adventurous spot is attracting a number of tourists to the valley. Proper trainers and lifeguards have been assigned at the spot for tourists operating for jet skiing. Ever since this adventurous activity has taken off, hundreds of tourists from different parts of the country are visiting every day to get some relief in the Valley of Paradise. जेट्स की राइड होती है यहाँ पे, तो इसमें बहुत थ्रिलिंग एडवेंचर है, तो टूरिस्ट बहुत एंजॉय करते हैं यहाँ पे। अप्रॉक्सीमेटली सर 3 से 4 मिनट की राइड होती है, 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस होती है और 600 उसके चार्जेस रहते हैं। और एक जगह पे चालू कराए निशात में, तो 2-3 दिन से वहाँ भी बहुत फ्लो दिख रहा है हमें, तो वहाँ भी बहुत अच्छा चल रहा है हमारा। मुझे जेट स्की तो बहुत ज़्यादा पसंद आया एंड JNK टूरिज्म का ये जो मोटिव है कि श्रीनगर को एज ए एडवेंचर टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी सेल करना चाहिए, वो एक बहुत बड़ा वो स्टेप है। एंड जो JNK टूरिज्म जो आज इसको बनाने की कोशिश कर रही है, लाइक दाल लेक तो है कि लाइक लग्जरी है, इधर पे कल्चर है, सब कुछ है, बट फॉर यंगर जनरेशंस यहाँ पे JNK टूरिज्म की तरफ से जो स्टेप लिया गया है वो बहुत बेहतरीन है। जहाँ पर जेट स्कीज है जो मतलब फुल्ली एकदम एडवेंचरस है। एंड कश्मीर को लोगों ने सिर्फ शिकारा, दल लेक, पहाड़ों के लिए, सीनरी के लिए, नेचर के लिए देखा है, बट लेकिन अगर एज ए एडवेंचर डेस्टिनेशन हम देखने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कश्मीर के पास में फॉर एडवेंचर टूरिस्ट। Several other water spots have also gained traction in the Kashmir Valley. Canoeing and kayaking are the few among them. Besides being a major draw for tourists, these water sports have also been taken up by a number of youngsters in the valley who made the entire state and the country proud with their performance. Moreover, to give boost to it, the government installed high-tech ergometers at the Nehru Park Water Sports Centre in Srinagar. Other activities like enjoying a ride on a speedboat or shikara, along with exploring the lake's natural beauty, are also popular among tourists. पहले एक माना जाता था कि दाल लेक सिर्फ शिकारा के लिए लिमिटेड से, ऐसा लगता था लोगों को, क्योंकि हाउस बोट में रहना, शिकार राइड करना। लेकिन अभी कंसेप्ट काफ़ी चेंज हो गया है। आजकल हमारी जो नई जनरेशन आई, उनको थ्रिल चाहिए, एडवेंचर एक्टिविटी चाहिए। तो ये जो जेट स्की है, हमारे आज 80 ईयर्स में रिकॉर्ड आपने देखा है सामने, 80 ईयर्स के यंग मैन ने भी किया है, तो मैं उनको यंग मैन ही बोलता हूँ। सब लोगों ने जेट स्की एंजॉय किया। ये फॉरेन में ये सारी एक्टिविटी चलती है और फॉर्चुनेटली हमारे JK टूरिज्म ने बहुत अच्छे स्टेप लिए और ये सारी जो फॉरेन में एक्टिविटी चलती थी, ये सब सारी एक्टिविटी यहाँ आई है। और दाल लेक में घर में गंगा है, ऐसी बात हुई है, तो जेट स्की एंजॉय करे, सर्फिंग एंजॉय करे, स्पीड बोट एंजॉय करे, शिकार राइड एंजॉय करे। मतलब जो कुछ एक टूरिस्ट को चाहिए, यंग हो ओल्ड, कोई भी टूरिस्ट को चाहिए, वो सारी एक्टिविटी का भंडार कश्मीर में भरा हुआ है। तो मैं प्राउड के साथ बोल सकता हूँ कि एक जो टूरिस्ट यहाँ होप लेके आते हैं, 100% सेटिस्फाई करके जाते हैं। Paragliding is another adventure sport which is getting a major push in the territory. By taking one on a magical whirl around the majestic valleys and the grandeurs of the Himalayas, it serves as a great tourist attraction. Hot air balloon rides at Zabawan Park is also attracting tourists to enjoy the panoramic vistas from bird's eye view. These
balloons can travel up to a height of 3,000 feet in the altitude and can accommodate 4 people at a time. With many such options to explore owing to its mind-boggling geographical diversity and efforts of Tourism Department, Jammu and Kashmir is becoming a new tourism hub of adventure sports. Jammu and Kashmir is witnessing a massive development when it comes to connectivity. Be it the construction of roads, bridges or railways, various projects are being undertaken in different parts of the territory under government schemes. At present, the connectivity work is going on in full swing in the far-flung areas of Rajouri under PMGSY. Locals are happy as it will not just make their lives easier, but will also create employment opportunities. Residents in far-flung areas of Rajouri are now riding up with hopes of a better future. And all this has been possible due to various government schemes, especially Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana or PMGSY, under which the construction of several roads and bridges in the district is underway. The work on one such road is going on in full swing in the far-flung areas of the district and is on the verge of completion. तो ये हमारा काम सर 2018 में चला था और आज ये 2022 से पहले हम लोग इस रोड को कंप्लीट करने जा रहे हैं सर। तो ये आप लोग देख लीजिए सर, ये सारे गरीब लोग थे, ये उठा के पैदल चलते थे यहाँ से सर 15-20 किलोमीटर आगे। तो यहाँ पे 3-4 पंचायतें सर यहाँ इसको जोड़ रही हैं सर सारी इस जगह को। तो ये लोग बहुत खुश हो गए सर आज की डेट में, और ये सुबह इनको 10 गाड़ियाँ आती हैं और 10 गाड़ियाँ शाम को छोड़ती हैं सर। ये यहाँ से हम लोग खवास को भी ये रोड टच कर रही है सर, और ये बकोरी को भी कोटरंका को भी जोड़ रही है सर, और यहाँ से हम लोग इसी रोड से हम मोगला 63 होके जम्मू भी जा सकते हैं सर। तो ये कम से कम 10 पंचायतों को ये रोड जोड़ रही है सर आगे की तरफ। Under the PMGSY scheme, a 13-kilometer road is being constructed that will link Dhalodi to a total of 10 panchayats, including Kanthol, Sadda and Gadia. This will not just make commuting easier for locals, but will also solve their several other woes. गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया है, और हमारे PMGSY वालों का खास करके मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिनने हमारी ये मुसीबत और सख्ती को दूर किया है। सबसे पहले जिस वक्त यहाँ रोड नहीं थी तो हमारे कई मरीज़ जो थे ये यहाँ से दलौड़ी ले जाने में ही कई की डेथ हो गई थी। तो इस वक्त हमारी ये रोड की प्रॉब्लम जो है ये दूर हो चुकी है, बहुत ठीक ठाक रोड बनी है। हमारे PMGSY वालों का मैं शुक्रगुजार हूँ। तो ये बहुत बैकवर्ड एरिया था, इसमें कोई रोड वगैरह नहीं थी। तो अब ठीक है, हमारी जो परेशानियां हैं ये दूर हो चुकी हैं। जो स्कूल है वहाँ से बच्चे और लोग वहाँ से टूर के दलौड़ी जाते थे, उस टाइम दलौड़ी पेपर थे, अड़गी और रजौरी जाते थे, तो बहुत मुश्किल देखी लोगों ने। तो आज गवर्नमेंट का और PMG का बहुत बहुत शुक्रिया, ये रोड आई। आज हमारी ये स्कूल वाली गाड़ी यहाँ से कंथोल स्कूल में जाती है, और वहाँ से जो बच्चे दलौड़ी जाते हैं, ये इस स्कूल में इतनी सहूलत हुई कि वहाँ से कंथोल से और दलौड़ी स्कूल में जाते हैं बच्चे। Connectivity is not only a key component of development, but also a key ingredient in ensuring sustainable poverty reduction. Post the abrogation of Article 370, Jammu and Kashmir has witnessed an impeccable progress in its status of road connectivity. The completed road length that was 39,345 kilometers prior to 2019 has today increased
to 41,141 kilometers. The percentage of backdropped roads has also increased from 66% to 74%. Moreover, the average macadamization of roads that was just 6.54 kilometers per day before 2019 has today increased to 20.68 kilometers per day. All this has contributed to lifting up the position of Jammu and Kashmir from 12th to 3rd in PMGSY ranking at national level. With the improvement of connectivity, especially in the rural areas of the Union Territory, will not only link people living in far-flung areas to the mainstream, but also improve their living conditions by giving boost to more business activities. Well, from conducting awareness camps and seminars to hosting several festivals, the armed forces in Jammu and Kashmir have been trying their level best to cater to the needs of the citizens. Recently, the Border Security Force organized a free medical camp for the border residents in Katwa district to help them avail healthcare facilities at their doorstep. The armed forces keeps on taking a number of steps on timely basis to provide their services to the local public and improve their well-being. From organizing seminars to local festivals and events, these uniformed heroes make sure to interact with the citizens and work collectively with them on the ground level. Recently, a medical camp was organized by the Border Security Force or BSF in Katwa district of Jammu and Kashmir as a goodwill gesture and in continuation of its commitment towards the welfare of border residents. The Deputy Inspector General or DIG of BSF, Harilal, inspected the camp before it opened for the public. A team of doctors both from Civil Hospital and BSF were roped in for the camp. यहाँ पे हर साल की तरह आज फ्री मेडिकल कैंप यहाँ पे लगाया गया। इसके साथ साथ सिविल से भी डॉक्टर आए हुए हैं और हमारे बीएसएफ के हैं कम से कम 5 डॉक्टर हैं और एक लेडीज़ डॉक्टर अलग से है जो महिलाओं की चेकिंग करेगी। इनके बाद जो यहाँ पे गांव के लोग आए हैं उनके लिए भी ये दवा कर रहे हैं। हम अपना गांव वालों के साथ में भी इनकी सुख दुख में साथ देते हैं और इनकी जो बीमारियां होती हैं उनको भी तो पूरी तरह से जो दवाइयां हैं उतनी पर्याप्त नहीं होती, लेकिन फिर भी जो इनिशियल किसी की बीमारी है तो इस समय पकड़ी जा सकती है और उसका सही टाइम पे सही उपचार हो सके, यही उद्देश्य है। Held in the border outpost area of Maniari in Pansar Panchayat of Katwa's Hiranagar Tehsil, the camp was attended by around 500 people from the village as well as neighboring villages. The doctors did a basic health checkup of all patients and prescribed them the relevant medicines. They also gave them several tips to develop a healthy and a better lifestyle, besides spreading awareness about the importance of regular health checkups. Locals were happy and thankful to BSF for their noble endeavors. आज जो हमारे इधर मेडिकल कैंप लगाया है बीएसएफ वालों ने 67 बटालियन, तो इनके कमांडेंट जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हमारी 500 पंचायत में तो हमारे ये 5-6 गांव हैं जो नज़दीक पड़ते हैं, तो सीमावर्ती गांव में हमारे लोगों को बहुत समस्या रहती है।
तो एक तो सीमावर्ती गांव के रहने की वजह से और दूसरा गरीबी की वजह से अपना मेडिकल चेकअप नहीं करवा सकते हैं। तो आज जो ये इन्होंने बीएसएफ वालों ने इधर मेडिकल कैंप लगाया है, इसके लिए मैं सभी लोगों की तरफ से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत अच्छा ये कैंप लगा हुआ है और फ्री में मुफ्त में दवाइयाँ दे रहे हैं सबको। और काफ़ी संख्या में हमारे जो गरीब लोग जिनके पास कहीं चेकअप कराने के लिए या दवाइयाँ लेने के लिए पैसा नहीं होता है, बॉर्डर पे बिल्कुल गरीब बीपीएल फैमिलियाँ काफ़ी हैं। और आज वो सब लोग यहाँ पे आपने देखा ही है कितनी लाइनें लगी हुई हैं, यहाँ लोग फ्री में मेडिसिन ले रहे हैं और अपना चेकअप करा रहे हैं। और बहुत अच्छी तरीके से बड़े बड़े अच्छे डॉक्टर बीएसएफ से यहाँ उनको चेकअप कर रहे हैं और उनको मेडिसिन के साथ साथ और भी अगर उनको ज़रूरत है कोई आगे कोई ट्रीटमेंट करवाने की, तो वो भी बीएसएफ ने बोला कि हम उनकी आगे भी ट्रीटमेंट उनका जारी रखेंगे। It is due to such initiatives by the armed forces that people even in the most far-flung areas of the country are able to avail the government facilities and lead a better life. As the monsoon season arrives in India, the country gears up to enjoy the wet weather and its beautiful festivals that are celebrated through dancing, singing and feasting. So today in a section of Incredible India, we'll take you to witness the festivities of Hariyali Teej, which is observed with great enthusiasm across various parts of the country, presenting our rich culture and traditions. The female folk, decked up in beautiful attires, took to traditional dancing and singing as they celebrated the most awaited festival of Hariyali Teej. Regarded as the fasting festival of Hindu married women, the occasion celebrates monsoon and the union of Lord Shiva and Goddess Parvati. As a tradition, women in northern India also visit their parents' house to celebrate the occasion. Today, the festival has taken a greater shape and is observed with great fanfare in different parts of the country. In Amritsar, city of Punjab, a big event was organized by an NGO to celebrate Hariyali Teej. Various activities, including ramp walk, were hosted for entertainment and enjoyment of women. तीज इसलिए मनाई जाती है कि सावन में जब लेडीज अपने मायके जाती थी तो वहाँ पे वो इकट्ठी होके एक मौका मिलता था उनको आपस में अपने ससुराल की बातें करने में। इतने दिनों बाद वो मिलती थी तो वो तीज वो झूले डालती थी, वहाँ पे मिलती थी। और भगवान शिव से भी ये वाला थोड़ा सा त्योहार जो है जुड़ा हुआ है। हम यहाँ पे देखो सब अपने अपने ट्रेडिशनल ड्रेसेस में तैयार होके आए हैं और यहाँ पे गिद्दा और ट्रेडिशनल जो पंजाब के डांसेस हैं वो करेंगे और डिफरेंट गेम्स होंगी यहाँ पे। सब अपने आजकल के मौसम में सावन के में यहाँ पे सबके मायके में खीर पूड़े बनते हैं तो लेडीज़ जाती हैं अपने मायके अपने पति के व्रत के लिए, पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और काफ़ी महत्व है इस त्योहार का पंजाब में। In Rajasthan's capital Jaipur, the festival forms the liveliest and colourful celebrations wherein a procession of goddess Parvati is taken out from city palace over a period of at least 2 days. Equipped with chariots, decorated camels, dancing folk artists, brass bands and royal palanquins. The traditional procession is the ultimate hub of a large number of folk and cultural programs enjoyed by both locals as well as tourists visiting the city during this time. बेहद खुशी है कि आज हम वापस 2 साल बाद इतने रॉयल तरीके से तीज का त्यौहार मना पा रहे हैं। आज जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही जोश है, लोगों में बहुत उत्साह है, बड़े बुजुर्ग सभी एज ग्रुप्स के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और ये शाही तीज की माता की जो सवारी है, सिंदारा और तीज का जो महोत्सव है, सभी बहुत धूमधाम
धूमधाम से मना रहे हैं। आज ऐसे लाइव इतना पास से देखकर, दोबारा से वैसे ही हर्षोल्लास देखकर बहुत खुशी हो रही है और एंजॉय कर रहे हैं। वो 2 साल जो थे वो बीत गए, लेकिन आज कुछ नई शुरुआत को देख के दोबारा से बहुत अच्छा लग रहा है। Festival's grandeur was no less witnessed in other parts of the country, where women were seen playing on rope swings, singing folk songs, dancing and applying henna on each other's hand. In the capital New Delhi, a 3-day-long Teej Mela was held at the Hart. The carnival offered women with lots of shopping options, along with involving in a number of other activities. A variety of food also left the visitors spoiled for choice. तीज का त्यौहार बेसिकली सावन को सेलिब्रेट करने के लिए होता है, तो फिर बहुत जगह तीज मेले भी लगते हैं और तीज मेलों में फिर न्यूली मैरिड के लिए स्पेशली ये बहुत बड़ा त्यौहार होता है। फर्स्ट तीज उनके लिए बहुत बड़ी होती है, तो फिर वो सब तैयार होके कुछ ग्रीन कपड़े भी पहन के और सब तैयार होके जाते हैं, मतलब तीज के मेले में भी जाते हैं। उसमें फिर झूले होते हैं वहाँ पे और शॉपिंग वगैरह भी, जैसे भी मतलब होता है कि ऐसे करके सेलिब्रेट करते हैं। Hariyali Teej is also a festival of devotion towards Mother Nature and family. It provides an opportunity for the ladies of different age groups and communities to come together and be a part of something special. Be it sari-clad women, swings on trees, or mehendi artists putting impeccable designs on hands and feet. It's the feeling of oneness that sets the day of Hariyali Teej apart. That's all we have for you in this week's episode. Till we see you next week, it's goodbye from the entire production team.